प्रभु जी और एक क्वेश्चन था। हरे कृष्णा। सॉरी टू इंटरप्ट माता जी, एक्चुअली हमारा समय हो गया है, इट्स ऑलरेडी 7:48। सो वी वुड लाइक टू, आप सबका क्वेश्चन हम लेंगे, प्लीज डोंट वरी, आप सबका क्वेश्चन हम लेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है? जिसका भी अभी नहीं लिया गया, नेक्स्ट वीक वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, ओके? सो हिज ग्रेस माधव मुरारी प्रभु जी हैज जॉइंड एंड नाउ आवर सेशन विल स्टार्ट on Krishna consciousness in Russia. So let me first introduce Prabhuji. Let me have a pleasure to introduce Prabhuji. Then we'll go with session. So His Grace Madhava Murari Prabhuji is worldwide preacher and he's associated with ISKCON Moscow. So let's welcome first His Grace Madhava Murari Prabhuji by loud chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So His Grace Madhava Murari Prabhuji is a dear disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, who is a ISKCON Guru, GBC and BBT trustee. His Grace Madhava Murari Prabhuji, his legal name is Mikhail Meshanin, and he is from Russia. He has got higher education in law from Saratov Law Academy in 2005. He joined ISKCON in 2006 to help the humanity and world at large by spreading the message of Bhagavad Gita all over the world. He is the part of many preaching activities all over the world and conducts many educational seminars and programs. He does the translation services of Indian ancient scriptures there. So जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज रशिया में इतना प्रचार हो रहा है, तो रशियन भक्त हैं जो कि प्रचार कर रहे हैं, जिन्होंने, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती, they don't know Hindi, they don't know English, but a devotee like Madhava Murari Prabhuji, they are translating our ancient scriptures in Russia, so that in Russian language, so that they can be benefited, Russian people, okay? And at present he is in Yaroslavl, Russia. He is now preaching in Golden Ring area. So let's again chant Mahamant for His Grace Madhava Murari Prabhuji and welcome him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Prabhuji will speak in English. Prabhuji English में बोलेंगे और I will be translating in Hindi. मैं उसको हिंदी में translate करूंगा, but not word to word. I will try to translate the summary. What Prabhuji will say, I will speak a summary of that. Okay, right? So welcome His Grace Madhava Murari Prabhuji. Thank you. Hare Krishna, nice to see all of you. Hare Krishna, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर. I prepared some slides for you to show, to see that you could see the photos how Russian ISKCON was developing. मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे रशिया में जो ISKCON है वो डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है. We will be speaking how Srila Prabhupada visited Moscow in 1971 and what happened after this. 1971 में मॉस्को, उसके बाद क्या हुआ मॉस्को में? So Srila Prabhupada visited Moscow in 1971 and we will be speaking what happened after this. Srila Prabhupada जो है बता रहे हैं, right? Srila Prabhupada is speaking, right? Okay. Okay, but before this we will read from Srimad Bhagavatam. Venugopal-charan, if you have Srimad Bhagavatam in Hindi, then we can read a little bit from the purport to this verse, Srimad Bhagavatam 4:30-37. Maybe you have this verse on your mobile. Do you have it? Yes, we just. Okay, very good. तो हम श्रीमद् भागवतम 4:30-37 से पढ़ेंगे. Yes, yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam 4:30-37. Tesham vicharatam padbhyam tirthanam pavanechkaya bhitasya kimna rocheta tava kanam samagamaha. Translation: Dear Lord, your personal associates, devotees, wander all over the world to purify even the holy places of pilgrimage.
Is not such activity pleasing to those who are actually afraid of material existence? Are you ready to read the Hindi translation? I need 1 minute, Prabhuji. I'm just opening. Okay, 4:30-37. Here in this verse, we read that there is a special category of devotees who are preachers and they are very dear to Supreme Lord. Translate. Sorry, Prabhuji, I was busy in this. Translate. Okay, so I'm just Translate. Okay, I'm just translating the from here only. Then it's opening there. Okay, so dear Lord, your personal associate devotees wonder, प्रिय भगवान, आपके जो पार्षद हैं, आपके जो वो पूरे विश्व में घूमते हैं और सब जगह को प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, होली प्लेसेस को. Is not such activity pleasing to those who are actually afraid of material existence? तो क्या ये जो एक्टिविटी है, ये जो material existence से जो afraid, is not such activity pleasing to those who are is not such activity pleasing to those who are actually afraid of material existence? हाँ, तो जो material भौतिक Yes. जो भौतिकतावादी लोग हैं. Okay, Prabhuji, it's open now. I will read the exact translation. Okay, very good. Very good. Let's do it. 4.30.7, right? 4.30.37. Yes. So please read the translation. Hare Krishna. हे भगवान, आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं, जो इस संसार से भयभीत हैं. क्या ऐसा कार्य इन सब के लिए रुचिकर नहीं होता? Okay. Now we'll read from the purport and I will show you. Venugopal Prabhu, you just read this in Hindi that is in blue. Okay, this part. Please find this right, Prabhuji, right. translation of the purport in and read it in Hindi. Yes, yes. Right, Prabhuji. So, भक्त दो प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी तथा भजनानंदी. भजनानंदी एक ही स्थान पर रहते हैं, वे कहीं नहीं जाते. ऐसे भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं. वे आचार्यों द्वारा बताए गए महामंत्र का जप करते हैं और कभी-कभी उपदेश देने बाहर जाते हैं. गोष्ठानंदी भक्त वे हैं जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं. वे सारे संसार तथा उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने के लिए विचरण करते रहते हैं. And another part of this purport, this one at the end, this one. तो अतः वह जिस किसी स्थान में अतः प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है. यस, अतः प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वो शुद्ध भक्त की संगति करे और भव कल्मश से छुटकारा पा सके. प्रत्येक व्यक्ति को विचरण करने वाले भक्तों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इन भक्तों का एकमात्र कार्य बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुड़ाना है. Okay. Oma Gyana Timirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshur Unmilitam Yana, Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manoh Pishtam, Stapitam Yena Butale, Svairupa Kadama Yam Dadati Svapadantikam. Vanchakal Patarubhyascha, Kripa Sinubhya Evacha, Patitanam Pavane Bhyo Vaishnava Bhyo Namo Namaha, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So those who are Goshtanandis, those who are preachers, they are very dear to Supreme Lord Shri Krishna. तो जो प्रचारक हैं, जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं. Srila Prabhupada is one of them. श्रील प्रभुपाद उनमें से एक हैं. He is Shaktivesh Avatar. Shaktivesh Avatar means person who was sent by Supreme Lord directly to this world exactly to distribute this spiritual knowledge. श्रील प्रभुपाद जी शक्त्यावेश अवतार हैं, जो कि भगवान द्वारा भेजे गए हैं इस जगत में इस भक्ति का प्रचार करने के लिए. And we have one moment. I will close this and I will open this again. And we have one very useful website which is called vanipedia.org.
here we can find a lot of interesting information regarding Srila Prabhupada's life. तो ये वानीपीडिया जो वेबसाइट है बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसमें हम श्रील प्रभुपाद के जीवन से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देख सकते हैं. So here in June of 1971, in June, Srila Prabhupada visited Moscow. Here we can find this information. From June 20 to June 26, he was in Moscow. तो 20 जून से 26 जून तक श्रील प्रभुपाद जी मॉस्को में थे. हम देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट में. So just for a few days he was in Moscow, and we will be speaking what was the result of this short visit. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर थे और उन्होंने बताया कि वो क्यों इस थोड़े समय के लिए यहाँ पर आए हैं. And the result was Srila Prabhupada later on, when this visit finished, he wrote a letter to his disciple Tamal Krishna. And here, Venugopal Charan Prabhu, you can see this in English. It will be easier for you to translate, right? So here, Srila Prabhupada writes from Moscow to Tamal Krishna. He writes, "We talked with one big professor, Mr. Kotovsky, and Shema Sundara talked with many great writers and musicians." तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लेटर लिख रहे हैं तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कि हमने जो है बहुत बड़े एक प्रोफेसर हैं मिस्टर कोटोव्स्की और हमने उनसे बात की और श्याम सुंदर जो हैं उन्होंने बहुत बड़े राइटर्स और म्यूजिशियंस से बात की. Two boys are working with us, one Indian and one Russian. दो लड़के हमारे साथ काम कर रहे हैं, एक इंडियन है भारतीय और एक है रशियन. So there is a good prospect for opening a center, although the atmosphere is not very good. The embassy was no help. हालांकि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छा है हम यहाँ पर जो है एक सेंटर खोलें. तो एम्बेसी हमारी मदद नहीं कर रही है. So our visit to Moscow was not so successful, but for the future it is hopeful. तो हम मॉस्को आए लेकिन ये बहुत ही सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन भविष्य में ये जरूर कामयाब होगा. Actually, Srila Prabhupada wanted to speak with Soviet government. He wanted to preach Krishna consciousness to Soviet government, and he asked Professor Kotovsky, Mr. Kotovsky, to help him to arrange this meeting, but Kotovsky refused because all these religious issues were strictly prohibited in USSR. तो प्रभुपाद जी जो हैं रशियन जो सोवियत गवर्नमेंट है उनसे बात करना चाहते थे, तो उन्होंने प्रोफेसर कोटोव्स्की को संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि रशिया में जो है बहुत सख्त कानून थे, मतलब वहां दूसरे धर्म का प्रचार नहीं कर सकते. But anyway, he didn't lose hope, and during these 5 days he was able to do something. लेकिन प्रभुपाद जी ने कब आशा नहीं छोड़ी कि लेकिन आगे के समय में कुछ ना कुछ होगा. And we will also look on some photos from this 1971. Here you can see Srila Prabhupada, and where he is. He is on the Red Square. It is the center of Moscow, and this building is called Saint Basil Cathedral. Saint Basil Cathedral. Saint Basil Temple. Saint Basil Mandir. ओके, तो सेंट ब्राजील मंदिर है, सेंट रे रशिया मॉस्को का सेंटर है, वहां पे प्रभुपाद जी का ये फोटो है जो हम देख रहे हैं. Not Saint Brazil, Saint Basil. Basil. It is male name. Brazil, it is country. Okay, Basil. Yeah, okay, good. Okay, so here you can see also the same picture. I chose this picture as this virtual background here for our broadcasting. This picture. हम ये फोटो देख सकते हैं पीछे, ये जो बहुत ही सुंदर दृश्य है. So this cathedral or this mandir is situated in the center of Russia, nearby on the Red Square area. एरे स्क्वायर एरिया में रशिया के सेंटर में ये मंदिर स्थित है. So here we can watch some pictures. The same Saint Basil Cathedral, and here we can see Srila Prabhupada and his personal servant Shema Sundara Prabhu, or maybe Aravindaksha Prabhu. He traveled to Moscow with 2 servants. One was Shema Sundara Das, another was Aravindaksha Das.
तो ये वही जगह है जो हमने अभी जिसके बारे में चर्चा की। और ये प्रभु जी, प्रभुपाद जी दो सर्वेंट्स के साथ गए थे अपने। एक श्याम सुंदर प्रभु थे, एंड द सेकंड नेम प्रभु जी? Aravindaksha. ओके। Hare Krishna. Okay, let's go to the next picture. To the next photo, we can see also this red square. It is also red square, and in the in the right corner, you can see here. You can see this building. It is Lenin Mausoleum, and here the dead body of Vladimir Lenin is lying. Is kept. The dead body of Vladimir Lenin, who created USSR. This dead body is kept in this building, this mausoleum. ओके, जो आप देख रहे हैं राइट में, ये म्यूजियम है। यहाँ पे डेड बॉडी यूएसएसआर के नाम प्रभु जी ने आप भी बताया, वो उनका डेड बॉडी यहाँ पर है। Okay, so we go further. Here, Srila Prabhupada, he is in his hotel. The name of hotel is Nacional, and he was looking around, and he was thinking how to distribute, how to spread Krishna consciousness in this country. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक होटल में हैं, जिसका नाम प्रभु जी ने अभी बताया। यहाँ पर प्रभुपाद जी सोच रहे हैं कि कैसे हम इस कृष्ण भावना में को पूरे रशिया में हम फैलाएं। Okay, let's go to the next picture. The next picture here, it is bus station, and he is walking here, and local people, people from Moscow, Soviet people are also nearby. You can translate. ओके, ये बस स्टैंड है वहाँ का, और यहाँ पे लोकल जो है आप देख सकते हैं, लोकल जो सोवियत के जो वहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर पिक्चर में दिख रहे हैं। And it was surprising, but in 2011, when we were celebrating the jubilee of coming Srila Prabhupada to Moscow, there was one Mataji. One Mataji told that she personally saw Srila Prabhupada in Moscow in 1971. And after some years, she was able to get Bhagavad Gita as it is. Okay, तो एक माता जी हैं, जब हम 2011 में गोल्डन जुबली मना रहे थे, जो प्रभुपाद जी रशिया में गए थे, तो एक माता जी हैं, उन्होंने बताया था कि उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा था और बाद में फिर उनको श्रीमद् भगवत गीता मिली। So here somewhere there is his okay, and this is gates. This is gates to Eastern Studies Institute. Eastern Studies Institute, where Srila Prabhupada was speaking with Professor Kotovsky. Eastern Study Institute का गेट है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रोफेसर कोटोव्स्की जो थे, उनसे श्रील प्रभुपाद जी ने बात की थी। Going further, the next picture. And it is also, we have seen the gates to this institute. It is the door, and it is the door to the same institute. तो ये जब मैंने अभी तो अभी हमने गेट देखा इंस्टीट्यूट का, और यही उसी इंस्टीट्यूट का अंदर फिर एक और दरवाजा है, ये दूसरा। Okay, what we have more? The same cathedral, the same mandir, and also Srila Prabhupada is thinking how to spread Krishna consciousness in Russia. तो ये कैथेड्रल है, वही मंदिर, यहाँ पर प्रभुपाद जी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे कृष्ण भावनामृत को हम रशिया में फैलाएं। Okay, and this is Tverskaya Street. Tverskaya Street. Tverskaya Street है? Yes, Tverskaya Street. So this street is exactly between hotel where Srila Prabhupada was staying and Red Square, where this Saint Basil Cathedral, you can see it in the center of the picture, is situated, and Red Square and everything. It means that Srila Prabhupada was invited by Professor Kotovsky to Moscow, and Srila Prabhupada, the best place in Moscow, the center of Moscow was given to Srila Prabhupada in order that he could be accommodated there for 5 days. तो कोटोव्स्की जो प्रोफेसर है, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को बुलाया था। ये आप देख सकते हैं, ये वही कैथेड्रल और जो होटल था वहां के मध्य में है श्रील प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी को बेस्ट एकोमोडेशन दिया गया था वहां पर, सबसे अच्छा रहने के लिए, जहां 5 दिन प्रभुपाद जी रुके थे। So it is the center of Russia.
the center of Moscow, and this Moscow is the center of the capital city of Russia, and this is it was center of Moscow. Okay, then we are going. Yeah, thank you. And now we will be speaking about Ananta Shanti Prabhu. You can see Ananta Shanti Prabhu here on this picture. अब हम अनंत शांति प्रभु जी के बारे में बात करेंगे. आप देख सकते हैं फोटो अनंत शांति प्रभु जी का. So his ordinary name or official name or karmic name, as we say, is Anatoly Fedorovich Penyaev. You can see this on the screen. Anatoly Fedorovich Penyaev. Anuvadak. Anuvadak. प्रभु जी का जो कार्मिक नाम है आप देख सकते हैं, अनातोली फेडोरोविच पिंये. मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं. Your pronunciation is okay. And okay. Fedorovich, it is patronymic. It means that his father's name is Fyodor. Okay. तो फेडोरोविच ये जो है ये प्रभु जी के फादर का नाम है जो आगे लगा है नाम के साथ, पिताजी का. Yes, Pitajika. Okay, so here it is interview, and Prabhu, it will be really quite easy for you to translate because you can see this on the screen, right? I started preaching Krishna consciousness after Srila Prabhupada visited Moscow in 1971. Gradually, people in the Soviet Union became more and more attracted to Krishna consciousness, and it became quite widespread. The authorities, however, became afraid because so many of the intelligentsia were interested in Krishna consciousness. Everything spiritual was considered to be criminal, and thus they started repressions. तो यहाँ पे जो इंटरव्यू है उसमें बता रहे हैं कि मैंने जो है प्रभुपाद जी के आगमन के बाद 1971 के बाद कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, और धीरे धीरे सोवियत यूनियन के लोग जो हैं कृष्ण भावनामृत से आकर्षित होने लगे और ये फैलने लगा. लेकिन जो वहाँ की अथॉरिटी थी, जो वहाँ के गवर्नमेंट थी, वो इससे डर गए क्योंकि वहाँ पे क्योंकि ज्यादा लोग जो है इस कृष्ण भावनामृत में इंटरेस्ट लेने लगे, अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे. तो वहां पर क्या था कि अगर हम करते हैं स्पिरिचुअल धार्मिक कुछ भी करते हैं हम अगर, तो उसको जो है क्राइम माना जाता था, ठीक है, जुर्म माना जाता था. तो उन्होंने फिर उनके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया. Okay, let's read further. It was just like an explosion of Krishna consciousness in the Soviet Union. The authorities were terrified, so they tried to discredit the movement and present it as simply a group of crazy criminals. Yeah, crazy criminals, because I was the first one to preach and the only disciple of Srila Prabhupada. They tried to repress me and present me as a crazy criminal. The court accused my god brothers and me of teaching vegetarianism, which they said is harmful to the body, and for teaching mantras and praying, which they said is harmful for a person's mental condition. On this ridiculous pretext, they were accusing us. तो वहां पर जो है कृष्ण भावनामृत का विस्फोट होने लगा सोवियत यूनियन में. तो वहां की जो अथॉरिटी थी, जो वो इतनी डर गई कि उन्होंने जो है इस मूवमेंट के लोगों को, जो कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े थे, उनको जुर्म, मतलब एक बोला जाए क्रिमिनल बोला जाने लगा, क्राइम जैसे जो जुर्मी कहते हैं. तो क्योंकि मैं पहला व्यक्ति था जो वहां पर प्रचार कर रहा था और श्रीला प्रभुपाद का अकेला मैं जो डिसाइपल था, प्रभुपाद जी का शिष्य था, तो उन्होंने मुझे पकड़ के और क्रेजी क्रिमिनल मुझे घोषित कर दिया. क्रेजी क्रिमिनल मतलब कि पागल होता है जो क्राइम करता है, कह दी. ओके, द कोर्ट एक्यूज माय गॉड ब्रदर्स एंड मी ऑफ. तो कोर्ट ने जो है क्या मतलब बुनियाद रखा उन्होंने कि हम जो है वेजिटेरियन मतलब कि जो है सात्विक जो भोजन है उसका हम प्रचार कर रहे हैं, तो वो शरीर के लिए जो है अच्छा नहीं है, हानिकारक है. और हम जो मंत्र बोल रहे हैं और ये जो मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र हम जो बोल रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ये ठीक नहीं है. तो ये बिल्कुल बेबुनियाद चीजों पे हमें जो है एक्यूज किया जाने लगा. So according to the criminal law of those times, we had at least 2 articles in our according to our criminal law, and one activity that what was considered to be a crime is to teach vegetarianism, means to do harm for people's health. It was punishable. It was punishable. तो
तो क्रिमिनल लॉ के हिसाब से अगर आप वहां पर ये जो है इसका प्रचार कर रहे हैं, सात्विक भोजन मतलब मांसाहार ना खाएं, सिर्फ वेजिटेरियन बने रहें, तो उसके हिसाब से वहां पर वो बहुत बड़ा जुर्म था। आप पीपल जो मतलब वहां के लोग हैं उनके हानि पहुंचा रहे हैं, उनके हेल्थ को आप हानि पहुंचा रहे हैं, और ये जो है पनिशेबल है, मतलब कि इसकी सजा दी जानी चाहिए। And another activity that was considered to be a crime is not to work anywhere, means not to be an employee, not to work on, for example, on factory or some. You understand what I'm speaking about, right? Not to be an employee. It was also punishable because every Soviet person had to work somewhere, had to work for Communist Party benefit, for bright future. Okay, so it is punishable for whom, Prabhuji? For those who were not working somewhere, were not working officially. वहां पे अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं कुछ, तो फिर ये पनिशेबल था ये भी। Yes. Okay, so what we have here, Ananta Shanti Prabhu or Anatoly Fedorovich Penyaev, he was the first disciple of Srila Prabhupada, first Russian disciple and first Soviet disciple, Srila Prabhupada's disciple. तो अनंत शांति प्रभु जी श्रील प्रभुपाद के पहले रशियन सोवियत डिसाइपल शिष्य थे। So he was kept in mental houses from 1982 until 1987. He was kept against his will, of course. He was kept in mental houses, and all these drugs were used in order to, in order to ruin his mental state, mental health. 1982 से 1987 तक आनंद शांति प्रभु जी को मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया और उनको ड्रग्स दिया जा रहा था ताकि वो अपना मानसिक शक्ति जो है वो खो बैठे। But anyway, his mental health was saved by Krishna's mercy. लेकिन भगवान कृष्ण की दया से उनका जो मेंटल स्टेट था, मानसिक स्थिति, वो बिल्कुल ठीक रही। Why? Because he was always chanting, always when it was possible, he was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि वो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। They were trying to ruin his consciousness, but lying down under his Kamble, he was always chanting Mahamantra. तो वो उनकी मानसिक स्थिति को खराब करना चाहते थे, उनके कॉन्शियसनेस को, लेकिन प्रभु अनंत शांति प्रभु हमेशा जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। Okay, so let's go further. Here we have some statistics, and according to these statistics, it is January the 1st of 2015. According to this statistics, we have by this moment we have 76 Krishna 76 ISKCON centers registered in Russia. 76. तो ये जो हम गणना देख रहे हैं 2005 की गणना है। उस समय 76 जो हमारे हरे कृष्णा के सेंटर जो है वहां पर रजिस्टर्ड हो चुके थे। Okay, so they allowed us to be officially registered since 1988. 1988 के बाद से जो है वहां पे ऑफिशियली जो है इसको रजिस्टर करने दिया जा रहा था ISKCON को। Okay, so we have 76 ISKCON centers, and we have some ISKCON offices. To ISKCON offices, generally it is 78, according to this chart, according to this information. Prabhuji, 78 offices? No, not offices. 76 ISKCON centers and 2
ISKCON offices, official organizations, in order to deal with how to say secular organizations. You understand? Yeah. So 76 जो है सेंटर थे और 2 इस्कॉन के ऑफिस थे. Okay, now we will be looking on some photos. So this is book exhibition. This is book exhibition. It took place maybe in 1976 or 1978, something like this. ये बुक एग्जीबिशन है जो हम तस्वीर देख रहे हैं 1978 का है प्रोजेक्ट. 1978 राइट प्रोजेक्ट? 78 or 76. I'm not sure. 1976 या 1978 के बीच का है. Yes. Okay, and His Holiness Gopala Krishna Goswami, he came in United States of America, Soviet Union. He came to Soviet Union in 1976, and he was personally present here. You can see on these photos. It is how Bhaktivedanta Book Trust was participating on this book exhibition. तो इस बुक एग्जीबिशन में हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी उपस्थित थे. 1976 की बात है ये. और इस बुक एग्जीबिशन में इसी भक्तिवेदांत स्वामी के भी जो बुक्स थे उनको लगाया गया था, उनको दिखाया गया था. Okay, so you will see the first Soviet devotees here on these photos. It is, you can see the first Namahatas here, the first Namahatas. ये हमारे आरंभ के कुछ भक्त हैं जो हम देख रहे हैं नामहट सेंटर के. And these photos were made in the beginning of 80s. Beginning of 80s. 80. 80. Okay. तो ये 80s का. Okay, sorry. It is 80s. सन 1980 के आसपास का है. The first Namahatas, you can see all these devotees, all these people are really sincere, and Krishna is between them. The atmosphere is quite spiritual here, right? आप देख सकते हैं ये भक्त जो है कितने सिंसियर हैं. कृष्ण जो है बिल्कुल सेंटर में है इनके मध्य. So maybe in 1982 all these repressions were started. Before 1982 there were no repressions. 1982 में जो है ये शुरू हुआ था रिप्रेशन, उससे पहले नहीं हो रहा था. So maybe about 5 or 6 years all these repressions were going on, but in 1987, 1988, all this violence has stopped by mercy of Krishna. 5-6 वर्षों तक ये जो रिप्रेशन चला था, ये जो दबाया जा रहा था कृष्ण महानवमित आंदोलन को, और 1987 के आसपास ये बंद हो गया था. Okay, the first Harinamas you can also see here, all these Harinamas, and what is written here? It is written here, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. पहला हरे कृष्णा संकीर्तन है. आप देख सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है सामने. Let's see what we have more. And, okay, Harinamas. Well, if you wish, I can send you this PDF file also, if some of you want. अगर आप लोग चाहते हैं ये सब पिक्चर्स, तो प्रभु जी आप लोगों को ये सारी ये PDF फाइल भेज देंगे, सारी फोटोज. Yes, if you want, if you need, if you want. Okay, so this is book distribution. ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तकों का वितरण हो रहा है यहाँ पर. And okay, it is another story. Okay, what should I show you now? Oh, I will show you one very interesting thing.
मैं आपको बहुत ही it इंटरेस्टिंग is, चीज दिखाने वाला हूँ. yes, it is the first pilgrimage of Soviet devotees, the first pilgrimage to India, to Vrindavan, to maybe to Mayapur. I'm not sure about Mayapur. To Vrindavan, it is for sure. तो ये सोवियत जो वहां के भक्त थे उनका पहली धाम यात्रा है वृंदावन की. Yeah, as you can see in this on this picture here, it is Krishna Balaram Mandir. It is Krishna Balaram Mandir. So they were in this temple. आप देख सकते हैं कृष्ण बलराम मंदिर है तीसरा जो हमें दिख रहा है फोटो. So let's see, and here on this posters we can read, "Welcome to the devotees from USSR," or for example, we can read here, "The Soviet Hare Krishnas, thank you Gorbachev, thank you, Glasnost." यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टर पे बैनर पे लिखा हुआ है कि जो यूएसएसआर से जो भक्त आए हैं उनका स्वागत है, द सोवियत हरे कृष्णा. Thank you. And what does it mean, glasnost? Glasnost means publicity. Russian, प्रचार. not prachar. Publicity means prachar in Hindi, right? I think so. Maybe. So you see, it is written here on this poster, "Thank you, Gorbachev." Gorbachev is the surname of the Soviet leader who was in charge of Soviet Union at these years. "Thank you, Gorbachev." Thank you, Glasnost. Glasnost, it means publicity, because when Gorbachev came and when he was ruling in USSR, he changed drastically. He changed the politics of USSR, and he allowed many things. He allowed people to express their opinions only, because before him, if people were too much open in expressing their thoughts, they could be punished for this. But when Gorbachev came, the politics were changed, and people were feeling themselves more free. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो थैंक यू, धन्यवाद कर रहे हैं गोरबचोव का, जो कि बाद में जब आए उन्होंने काफी जो है उसको लीनियंट कर दिया. जैसे चीजें वहां पे बहुत खराब थी तो उन्होंने काफी चीजों के लिए आज्ञा दे दी थी. हमारा जो प्रचार जो कृष्ण का ये चल रहा था कृष्णामृत का. So here it is written, "Thank you Gorbachev, thank you Glasnost." It means thank you publicity, thank you the politics of publicity, which allows people now to become more free in their minds, to become more free in the sense that now they can travel to another country, for example, to India, to do this pilgrimage, because before that, it was quite difficult for Soviet people to travel anywhere except their own beloved USSR. वहां पर पहले सोवियत के जो लोग थे उनको आज्ञा नहीं थी दूसरे जगह ट्रेवल करने की, दूसरे देश में. लेकिन जो गोरबेचोव और एक और नाम प्रभु जी ने जो बताया, वो उनको थैंक बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने इन सब की आज्ञा दे दी. The second name, Prabhuji? Yes. Gorbachev. Second name. It is not the name. It is term. Glasnost. Glasnost means publicity. Okay. Publicity. Right. It means publicity. Right. Okay. So it is what? It is the same pilgrimage. So you also can see this, the Soviet Hare Krishna devotees. Thank you, Gorbachev. Thank you, Glasnost, and so on. And long live Soviet-Indian friendship, right? You can see this on the screen. So many interesting photos. See, it looks like Mayapur. Maybe it is Mayapur. Don't you know? Is it Mayapur or not? मायापुर जैसा लग रहा है. क्या ये मायापुर है? आप लोग जानते हैं? Maybe Mayapur, maybe not. I'm not sure. Okay. Anyway, so these photos are also quite unique because here we can see how the first Soviet devotees were taking initiation in holy name Harinama Diksha and
and Gayatri Diksha also. यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें जो सोवियत के जो भक्त हैं उनको हरिनाम दीक्षा और गायत्री दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा दोनों मिल रही है. Okay, very good. And also I will show you one thing here. Let's see. So before all these repressions were stopped, one devotee, his name is Prahlad. He was accompanying His Holiness Indradyumna Swami in his preaching programs. And Prahlad Prabhu, he was born, I think he is from Australia. So he decided to convince Gorbachev to stop these repressions. तो जो प्रहलाद प्रभु जी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन हैं, उन्हें इंद्रदीन स्वामी महाराज का संग मिला था, और दमन जो चल रहा था ये, उससे पहले उन्होंने गॉर्बेचोव से रिक्वेस्ट किया था, आग्रह किया था कि ये दमन कार्य को रोक दिया जाए. So you can see here these photos, like different devotees from different countries. They keep these posters, and on these posters it is written, "Free the Soviet Hare Krishnas." ये अलग-अलग देश के अलग-अलग प्रांत के भक्त हैं, आप लोग देख रहे हैं, और ये मांग कर रहे हैं, आप पोस्टर में देख सकते हैं कि जो सोवियत के जो भक्त हैं उनको आजाद किया जाए मिस्टर गोर्बेचोव से. Yes, here it is written, "Mr. Gorbachev, please let our friends go." And actually Prahlad Prabhu, he recorded song. You can find this song on YouTube if you like. When Prahlad Prabhu, maybe he was 6 years old or 7 years old, he was chanting this song, addressing to Mr. Gorbachev, that please help my friend go, let my people go, let my friends go, please make Hare Krishnas free. तो यहाँ पे जो प्रहलाद प्रभु हैं वो 6-7 वर्ष के हैं, और मिस्टर गोर्बेचोव से वो आग्रह कर रहे हैं एक संगीत द्वारा. उन्होंने एक गीत लिखा जिसमें वो आग्रह कर रहे हैं कि जो सोवियत के जो भक्त हैं उनको आजाद कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए. And here the upper photo on the right side, you can see all these children. It was musical group led by Prahlad, and they were chanting this song together. तो जो आप तस्वीर देख रहे हैं आखिरी में, ये म्यूजिकल ग्रुप है जिन्होंने प्रहलाद प्रभु ने जिसको लीड किया था और संगीत जो है उसको गाया था. So finally, Mr. Gorbachev, he decided to help us and to stop all these repressions. And since 1988, it was allowed for ISKCON centers to be registered officially in Russia, not in Russia, but still in Soviet Union. अंततः गोर्बेचोव जी ने इसको सुना और उन्होंने 1988 में इसकी आज्ञा दे दी सोवियत में हरे कृष्णा सेंटर इस्कॉन की स्थापना के लिए. Of course, it is quite difficult to tell all the history of the Soviet ISKCON and Russian ISKCON in our short presentation. कम समय में हम पूरा सोवियत इस्कॉन और रशियन इस्कॉन को हम नहीं दिखा सकते हैं. One devotee, by the way, he is Gopala Krishna Goswami's disciple. He wrote a book, Hare Krishna in USSR, and this book is like this, about how many? About 800 pages or 850 pages. गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के एक शिष्य हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है जो कि बहुत ही मोटी है, लगभग 800 से 850 पन्नों की. Because if we will ask, we can ask any of those devotees who were pioneers of the Hare Krishna movement in USSR, and each and every person from this period of time, those who were witnessing what was happening, any person, he or she can tell a lot of different stories. तो उस समय जो वहां पे भक्त के लोग मौजूद थे, उन्होंने एक एक घटना देखी है, और हर कोई जो है अलग अलग घटनाओं को बता सकता है. Okay. Anyway, we are going to
the next slides. Here we have what we have. I will show you picture. First of all, I will show you picture of our official Moscow deities. जो ऑफिशियल जो मॉस्को के जो विग्रह हैं उनके दर्शन आप कर रहे हैं. So their names are Shri Shri Doyal Nitai Shachisuta. श्री दयाल निताई सची सूता इनके नाम हैं. So we are worshiping these deities for many years in Moscow. कई वर्षों से हम मॉस्को में इन विग्रहों की सेवा कर रहे हैं. They are the center of Moscow community. मॉस्को जो कम्युनिटी है वहां का जो ये मध्य है, मतलब सेंटर. And also, if we would be able to speak with them directly, if we would have this divine spiritual ability, also these deities would tell us many different stories that they know about Soviet ISKCON and Russian ISKCON. तो अगर हमारे अंदर डिवाइन ट्रांसेंडेंटल वो शक्ति आ जाए तो हम इन डीटी से, इन विग्रहों से भी पूछ सकते हैं और ये भी हमें कहानियां बता सकते हैं सोवियत और जो इस्कॉन रशिया है, रशियन इस्कॉन है, उनके बारे में. Okay, now I will show you how the social service goes in Russia. How? Social service. Social okay. service means how we help society, food for life, and so on. अभी हम दिखाएंगे कि कैसे सामाजिक जो कार्य है, सामाजिक सेवा वो कर रहा है रशिया में इसको. So it is called food for life. Food for life. We are trying to distribute prasadam. Prasadam means sanctified food, food that was offered to Lord Krishna himself. We are trying to distribute this food to different people who can, for example, be poverty stricken. And for example, this food distribution can take place where the war is going on, or something like war is going on, or people they are in need, they have to eat something, but food is not available, so Hare Krishna devotees, they help these people. तो ये हम प्रसाद का वितरण करते हैं वहां पर रशिया में अलग अलग लोगों को, और खासकर अगर जैसे कहीं लड़ाई होती है तो वहां पर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो हरे कृष्णा के भक्त हैं वो वहां पर जाकर उनको प्रसाद देते हैं, जो कि भगवान को पहले ऑफर किया जाता है, भोग लगाया जाता है. Let's go to the next group of slides. So here you can see these old people, and we have devotees who are taking care of old people in the sense that they distribute prasadam to them, and also they take care of them to the extent that is possible in their situation. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको जो है हरे कृष्णा के भक्त जो है वो प्रसाद वितरण कर रहे हैं. जैसे हमारे यहाँ पर वृद्धाश्रम होता है वैसे ही वहां पे उनको प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, और जो भी सेवा उनकी कर सकते हैं वो करते हैं भक्त लोग. Okay, let's go further. The same story. People are grateful to ISKCON devotees that they distribute prasadam. वहाँ के लोग बहुत कृतज्ञ होते हैं जब इस्कॉन के भक्त वहां पर प्रसाद का वितरण करते हैं. And not only to how to say also when the city, when Moscow, when they arrange some programs in the city, big programs, we also try to participate in these programs and to do our little humble contribution. And for example, there can be such program like the City Day. City Day. Are you getting the point? City Day, the day of this particular city. And if this City Day is celebrated, then we also can take part and distribute prasadam in order to benefit people. तो जो वहां पर बड़े बड़े जब भी इवेंट कार्यक्रम होते हैं वहां पर जो लोग करवाते हैं, उसमें भी जो है इस्कॉन के भक्त पार्टिसिपेट करते हैं, उनका जो कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं उसमें, और एक प्रभु जी ने जो नाम बताया एक खास जो कार्यक्रम होता है उसमें भी वो लोग भाग लेते हैं इस्कॉन के भक्त.
Let's go to the next picture. The same story. And here you can see our Food for Life in charge, Nirmal Kanti Prabhu. These two pictures. He is our representative in city administration. जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये फूड फॉर लाइफ के जो है वहाँ के हेड हैं, निमाई कांत प्रभु, राइट? No, Nirmal Kanti. निर्मल कांति प्रभु जी. Yeah. So he is our representative in the city administration. Where? City administration, Moscow administration of the city. तो वहाँ पे प्रभु जी ही उसको प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है मॉस्को का. Okay, good. Well, also taking part in some celebrations here, and it is what it is. Seems to be it is orphan house. So we're trying to help them also by distributing prasadam and giving some gifts. ये अनाथालय है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अनाथ बच्चों को भी प्रसाद वितरण करने का हम प्रयास करते हैं. Okay, let's go further. It is our Sadhu Sangha festival. Sadhu Sangha festival. It is Sadhu Sangha festival every year. In autumn time, September or October, we have our festival, Vaishnava festival on the Black Sea. सितंबर अक्टूबर में ये जो फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जाता है. And about 5,000 or 6,000 devotees are gathering together in order to participate in kirtanas or in order to listen to some classes of our spiritual masters who also take part in this festival. तो 5 से 6,000 तक लोग इसमें आते हैं अलग अलग कार्यों के लिए, कीर्तन के लिए, अपने जो गुरु महाराज हैं उनको सुनने के लिए. So this festival we have every year, of course. In 2020, because of COVID-19, we had no opportunity to have this Sadhu Sangha festival, and we had this festival in 2021. We had this festival for a small group of people. But now we hope that this year, maybe by mercy of Krishna, maybe we will be able to arrange this festival as usually we do it. 2020 में कोविड के कारण हम नहीं कर पाए इसका आयोजन, लेकिन 2021 में छोटे कम लोगों के साथ हमने इसका आयोजन किया था, और भगवान की अगर दया रही तो इस वर्ष हम अवश्य इस फेस्टिवल का, साधु संघ जो फेस्टिवल है, इसका हम आयोजन करेंगे. So here you can see our Moscow temple. This picture, which is this picture, it is Govardhan Puja in Moscow temple. This one. गोवर्धन पूजा का तस्वीर है, आप देख सकते हैं. And what else? It is the celebration of different Vaishnava holidays in Moscow temple, and on one of these pictures seems to be it is Gaur Gopal Prabhu from India. Seems to be he also was visiting Moscow at least once. Seems to be it is Gaur Gopal. Do you know Gaur Gopal? Yes. तो यहाँ पे जो है अलग अलग त्योहार है जो वैष्णव के, उनका आयोजन हो रहा है, और गौर गोपाल प्रभु जी भी इस त्योहार में आए थे, इसमें किसी एक पिक्चर में से. Let's see. Seems to be he is Gaur Gopal, right? Yes, right, Prabhuji. He's Gaur Gopal Prabhuji. Yes, he was taking place in some programs in Moscow temple. Gaur Gopal Prabhu ki jai. Hare Krishna. Okay, let's go further. So we have some dramas. We have, and Bitu Malik also takes part in our celebrations. Bitu Malik married on one Russian Mataji, and now he is situated in Russia, and he is Bridjabasi Bitu Malik,
he is Brijabasi, and he's from Vrindavan, and many generations. He is a singer, and many generations before him, his father, his grandfather, and so on, they also were singers. He is nice singer, Bitu Malik. What name, Prabhuji? Pitta? Bitu Malik. ओके, बीतू मालिक. सो जो पिक्चर देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे गायक हैं और इनके फादर भी, इनके कई जनरेशन से ये लोग मतलब जो ये संगीत जो है गाते हैं ये भजन. Okay, let's go further. So, okay, again, you can see the picture of our deities, and now let's say like Shri Shri Doyal Nitai Shachisuta Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, worldwide ISKCON movement Ki Jai, Hare Krishna. And now, if you have any questions, I am ready to answer on these questions. Is this Madhava Murari Prabhu Ji Ki Jai? Thank you so much, Prabhu Ji. So first of all, we would like to express our gratitude by chanting Hare Krishna Mahamantra for Prabhu Ji. So please, everyone, all of you, unmute yourself, and yes, now you can unmute yourself and let's chant Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. His Grace Madhava Murari Das Prabhu ki Jai. Hare Krishna. Jai. Thank you so much for your kind participation. So if you have any question, अगर आप लोग का कोई भी प्रश्न है, आप प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हैं, प्रभु जी विल आंसर. ओके, अगर वीडियो ऑन करके आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो प्रभु जी आपको देख पाएंगे और अच्छे से बातचीत हो पाएगी. सो आप लोग प्लीज अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप वीडियो ऑन करके पूछिए. अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क डायरेक्टली इन इंग्लिश टू प्रभु जी, एंड इफ यू वांट टू आस्क इन हिंदी, अगर आप हिंदी में पूछना चाहते हैं तो आई विल ट्रांसलेट, मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा. सो फर्स्ट जिसका वीडियो ऑन है यहाँ पर है वो है सोहम प्रभु जी. सोहम प्रभु जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. Hare Krishna, Hare Krishna. So my question is that how to choose the person if I meet in front of me any days, he may be devotee or non-devotee, how to choose that that he will cheat me or not? First of all, we should listen to Srila Prabhupada's classes on the regular basis. What about translation? Is it needed or not? Translation to Hindi. I'll do, Prabhu ji. तो सबसे पहले तो हमें श्रीला प्रभु जी का प्रश्न है कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई हमें चीट करेगा या नहीं करेगा. तो प्रभु जी बता रहे हैं उसका उत्तर कि सबसे पहले तो हमें श्रीला प्रभुपाद जी के जो ट्रांसलेशन है उन्हें पढ़ना चाहिए. Okay, so first of all, we should listen to Srila Prabhupada's classes on regular basis, and it will help us to understand what is right, what is wrong. Because in ISKCON, each and every spiritual master or each and every senior devotee is nothing but Srila Prabhupada's representative. तो हमें सबसे पहले तो प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनना चाहिए, क्योंकि ISKCON में जितने भी गुरु हैं, जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं, वो सब श्रीला प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं. At the same time, you can ask, but what if I will understand Srila Prabhupada's message in the wrong way? What if I will do like this? I will understand Srila Prabhupada's message in the wrong way, and after this, I will be trying to compare this message with message of ISKCON devotees. Will it help me or not if I will do like this? So, as per my understanding, what Prabhuji is saying that Prabhuji, you have said that we should. Yes, if you are not sure what I'm saying, you just ask me. Yeah. Please. I should repeat again, right? Okay. You can ask, for example, what to do if I will understand Srila Prabhupada's message in the wrong way. How can I be sure that my understanding of Srila Prabhupada's message is proper understanding? तो अगर मैं प्रभुपाद जी को सुनता हूं
तो अगर मैंने उनको गलत समझ लिया, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो सही नहीं समझ पाए, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि वो सही है या नहीं? So it is exactly why we need to have Srila Prabhupada's representative. Srila Prabhupada's representative helps us to understand Srila Prabhupada. We can understand Srila Prabhupada's message to some extent according to our conditioning, and the spiritual master helps us to understand this message better, and also he helps to understand what is how we can apply this message practically. इसीलिए हमें आवश्यकता है श्रील प्रभुपाद जी के एक प्रतिनिधि की, जो हमें बताएंगे कि वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं और उसे कैसे प्रैक्टिकली हम अप्लाई करें अपने जीवन में. So it should be done simultaneously. We should listen Srila Prabhupada's classes on a regular basis because it is our foundation. And at the same time, we should take shelter of some senior devotee in ISKCON or spiritual master. तो हमें हमेशा प्रभुपाद जी का बार-बार हमें प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनने चाहिए, और उसके साथ ही हमें कोई वरिष्ठ जो ISKCON के भक्त हैं उनका आश्रय लेना चाहिए. Does it answer on your question? Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, next, Vikas Prabhuji, you can ask. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, my requirement chanting mala. So please you support me. How should I support you? What is chanting needed? Mala, chanting mala. What do you mean? What kind of help do you need? My requirement chanting mala. He wants chanting beats, so he is asking. You want chanting beat to get couriered at your home, right? Yes, yes. Okay. He wants chanting beats, Prabhuji. We will send. Okay. But what I should do? What I should do? What is expected from me? I mean, what is प्रभुजी आपकी expected? क्या सहायता कर सकते हैं इसमें? आपका मतलब यही प्रश्न है या और भी कुछ, मतलब कुछ प्रश्न भी है आपका इसके अलावा? नहीं नहीं, यही प्रश्न है मेरा. तो मुझे कैसे ये चैंटिंग माला मिलेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रभु जी से. ठीक है, तो मैंने आपको नंबर दिया है चैट बॉक्स में, आप उस पे कांटेक्ट कीजिएगा. आपको सो प्रभु जी बेसिकली ही वांट चैंटिंग बीट्स. आई हैव गिवन हिम द नंबर, ही विल कांटेक्ट एंड विल सेंड. Thank you. Okay. Hare Krishna. Chant Hare Krishna and be happy. Thank you, Jai. Okay. Thank you. Hare Krishna. Next question. Okay. Sana Mataji. Yes, Sana Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Prabhuji, I don't know whether I should ask this question or not, but question came in my mind, so I'm asking. Let's try. Actually, yeah, yes. Let's try. Let's see what will happen. Yeah, the question is like this Hare Krishna mantra does arouse our arouse our Kundalini power? Is it related to that? Well, it can be related to that, but it is not the most important thing. Of course, on the level of subtle body, some changes are going on, but the main point is that we can awaken our dormant love for Krishna because of chanting Hare Krishna Mahamantra. Please translate. माता जी का प्रश्न है कि क्या महामंत्र का जप करने से कुंडलिनी पावर जो है, शक्ति, वो भी जागृत होती है? तो प्रभु जी बता रहे हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है. ऑफ कोर्स होता है, बट उसकी आवश्यकता नहीं है. हमें आवश्यकता है कृष्ण प्रेम जागृत करने की. Which is more important. हाँ, वो अधिक जरूरी है, वो आवश्यक है. Why I ask this question, Prabhuji, because there are not many changes I can see within myself towards my attitude, daily routine. I'm getting on and off, my mood flicks. So lot many changes I can see myself. So that was the reason. And I am chanting other mantra as well. So can I do that? Can I continue doing that? Or is it itself enough for me? Mahamantra is it enough for me to do? So what you suggest? Please advise. Of course, Hare Krishna Mahamantra is enough because
it includes everything. All Krishna's energies are, and Krishna himself is presented there. So there is no need of other mantras. तो माता जी पूछ रही हैं क्या इससे अगर मुझे फायदा हो रहा है तो इसका आवश्यकता है कुंडलिनी पावर जागृत करने की या सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करें? तो प्रभु जी बता रहे हैं कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करें, उसी में सब कुछ समाहित हो जाता है. But at the same time, you are telling that you cannot, that you see that there is no, that, how to say, you are saying that not so many changes took place in your life, right? You told like this. So first of all, we should understand, according to Srila Rupa Goswami's instructions, the book is called Nectar of Instruction. Maybe you have this book in your library. If you don't have, I advise you, because you are asking what I can advise, I advise you to buy this book, Nectar of Instruction, written by Rupa Goswami. In our BBT, Bhaktivedanta Book Trust, this book, in ISKCON temples, you can buy this book, Nectar of Instruction. Please translate. Translate. प्रभु जी बता रहे हैं कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक है, पुस्तक है, आप उसको लीजिए और उससे आपको लाभ होगा. So in this book there is a verse number 3, and the qualities that are required in order to progress spiritually in devotional life, these qualities are mentioned in the text number 3. तो टेक्स्ट नंबर 3 जो है श्लोक संख्या, उसमें इसमें बताया जा रहा है क्या क्वालिटीज हमें चाहिए भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए. So one of these qualities is dharyat. Dharyat means tolerance, patience, and it means that we cannot expect the immediate result when we practice bhakti yoga, or basically any kind of yoga. We cannot expect that result will be immediate. इसमें बताया जा रहा है धैर्य रखने के लिए कि किसी भी चीज में हमें धैर्य रखना है, क्योंकि इमीडिएटली तुरंत हमें जो है फायदा नहीं होगा किसी भी चीज में. And a very nice example is given if, for example, a woman wants to have a child, time is needed. First of all, her husband should agree that yes, okay, we should have a child, and after this we have to wait for 9 months, and then this embryo comes out, so it takes time. The same way we can achieve something, we can get something on the spiritual path only if we are practicing for reasonable period of time. उदाहरण के लिए जैसे कि अगर एक स्त्री है, उसको अगर बालक चाहिए, तो उसको सबसे पहले तो उसके पति को तैयार होना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हमें बालक चाहिए. उसके बाद 9 महीने का समय और लगता है, तब जाके फिर एम्ब्रियो आता है और उसके बाद जाके बच्चा आता है. तो इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी ऐसा ही है, हमको एक समय देना होगा. ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, कुछ समय देना होगा हमें इस चीज के लिए. And also it depends on the intensity of our practice. If not so many things changes in our life because of bhakti yoga, maybe our practice is not so much intense. तो हमें इसमें तीव्रता भी डिपेंड करता है कि हम कितने तीव्रता से हम जो है इसका पालन कर रहे हैं भक्ति योग का, वो भी एक पहलू है. So this situation should be analyzed. Do I execute enough devotional service? Do I have enough sufficient sadhu sangha like this? Do I read books on the regular basis? What about my japa? I didn't get japa, chanting of the holy names. Japa. Yeah, but from the starting, Prabhuji, please. I'm sorry. Okay. So we should analyze our spiritual life. Translate. Yeah. तो हमें अपने जो आध्यात्मिक जीवन को एनालाइज करना चाहिए. What about our japa? How our japa goes? How our japa goes? Okay, हमारी जप की स्थिति क्या है? Okay. Do we read Srila Prabhupada's books on the regular basis? क्या हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़ रहे हैं? Do I have sufficient sadhu sangha? क्या हमें भक्तों का सही पूरा संग मिल रहा है? Sufficient? Do I execute enough devotional service, or I should execute more
devotional service in order to be more absorbed in Krishna consciousness. तो इस कृष्ण भावनामृत में और ज्यादा संलग्न होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या मुझे और प्रयास करने की आवश्यकता है? If we are under the guidance of a senior devotee, it will be much more easier for us to analyze our situation, our spiritual state. अगर हम किसी वरिष्ठ भक्त के आश्रय में हैं तो हम बहुत आसान होगा हमारे लिए अपनी स्थिति को देख पाना, माप पाना. Does it answer on your question? माता जी, Does it answer on your question? क्या आपको अपना उत्तर मिल गया माता जी? Yes. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. So we have 2 minutes more. Yes, I got the answer. Yeah, yes, I got the answer. Thank you so much. And I am, I started this part. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Tike. Okay, we have 2 minutes more, right? Right. So we can take one more question. Right. Okay, हम आखिरी प्रश्न लेंगे क्योंकि 2 मिनट बचा है हमारे पास. तो किसको ले हम? Vidisha, you can ask. Okay. Hare Krishna. Hare Okay, so what is the question? जी, आपके पीछे बहुत वॉल्यूम आ रहा है. What's going on? Hare Krishna. Are you going to ask something or not? I think Prabhuji is some problem in her home actually. That's why she is not asking. Maybe. Okay, let's ask another person to ask the question. So, Mataji, you can ask later on. आप बाद में पूछ सकते हैं अपना प्रश्न. Okay, no problem. Okay, अनुराग प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं. अनुराग प्रभु जी, you can ask. Okay. Hare Krishna Prabhu ji. Hari Bol. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. So Prabhu ji, my question. Hari Bol. Prabhu ji, my question is that how to maintain the consistency in the bhakti, in the devotional activities. How to maintain? Consistency, it is what? I have to look in my dictionary. One moment. Consistency, it is what? Consistency. Consistency. Okay, now I understood. Okay, all the consistency, all the logic of this spiritual practice is explained in our sacred scriptures. Translate. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि हम कंसिस्टेंसी, स्थिरता कैसे लाएं भक्ति में. तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभु जी कह रहे हैं कि शास्त्रों में इसका उत्तर हमें मिलता है, शास्त्रों में बताया गया है. According to our sacred scriptures, there are stages. It goes from Shraddha to Prema. तो शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा से प्रेम तक का जो है हमें सफर तय करना होता है. First of all, we have some interest to spiritual message. It is Shraddha stage. Then when we are ready to follow some instructions, it is called Sadhusanga stage. सबसे पहले हमारे श्रद्धा होनी चाहिए कुछ, उसके बाद फिर हम भक्तों का संग, साधु संग करते हैं. Because if we just like to listen to saintly people, but we are not about to follow their instructions, it means that actually sadhu sangha doesn't take place. Only it is just Shraddha level. अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं, साधु संग जिसे अगर बोलें कि जो कि फॉलो नहीं करता है, तो उसका कोई लाभ नहीं है. Then when we take spiritual initiation from spiritual master, Bhajana Kriya starts. It is the stage when we are trying to perform devotional service under authoritative spiritual guidance. उसके बाद हम आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेते हैं और फिर हमारी भजन क्रिया शुरू होती है आध्यात्मिक गुरु के आश्रय में. And simultaneously we have this anartha nivriti process when we gradually become free from different things in our hearts that are not beneficial for spiritual advancement.
के बाद अनर्थ निवृत्ति होती है, जो हमारे हृदय में बहुत सारे दोष हैं उनका जो है वो हटते हैं वो. When we become free from these anarthas, to some extent we become free from these anarthas, then it means we reach this nishtha stage. Nishtha means steady faith. तो जब अनर्थ निवृत्ति होती है थोड़ी बहुत, तब हम निष्ठा के लेवल पर आते हैं. And so on, and so on. It can be found in this book written by Vishwanatha Chakravarti Thakur, and this book is called Madhurya Kadambini. माधुर्य कदम्बनी जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है, उनके पुस्तक में ये पाया जाता है. So consistency is there because all these anarthas are mentioned and explained, and different difficulties that one will face when he is trying to progress spiritually. All this is mentioned in this book and in other books of our acharyas, and spiritual master also helps us to understand the consistency, how it goes. तो इन पुस्तकों में अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी, स्थिरता कैसे आएगी, उनके बारे में बताया गया, और हमारे आध्यात्मिक गुरु भी हमें इसमें सहायता करते हैं. Does it answer on your question? Thanks a lot, Prabhuji. Thanks a lot. Hare Krishna, Anurag Prabhu. Okay, okay, Venugopal Charan Prabhu. Officially, our time is out. What should we do? Should we stop, or we have enthusiasm to continue? What should we do? If you want, if our guests wants, we even can. I don't know when, but we can arrange special session, question and answers session if you like. I don't mind. We can do it one day. I don't know when, but it is possible. Prabhuji. Yes, definitely, Prabhuji, because we have so many questions from so many devotees, so we can have another question and answer session. Venugopal Prabhu, then you just collect these questions. If it is possible, and maybe we will arrange something. If our guests, if devotees are so interested to get answers, why not? We can arrange, right? If you like to arrange, if yes, it is possible. Definitely, I'm ready to serve. I'm ready to answer. That's so great of you, Prabhuji. So Prabhuji is ready to give time. So we will send some Google form, and we will take your questions, collect your questions, and we will ask from Prabhuji and revert you. Hare Krishna, thank you for invitation. It was very nice to be with all of you. Thank you so much, Prabhuji. So once again, we would like to thank Prabhuji with Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Prabhuji is again giving one session on 24th, I think. I need to check. We will send you a group morning session. Prabhuji will give on 24th. Yeah, 24th January. 23rd. Sorry, it will be Sunday. Sorry, please pardon. Yeah, please pardon me. So it's 23rd January. Prabhuji will be giving class in the morning. So you all are invited. We will send you the link. हम आप सबको जो है ग्रुप का लिंक, मीटिंग का लिंक भेज देंगे, और प्रभु जी का सेशन आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं. So thank you so much, Prabhuji, for joining. Thank you so much for giving your precious time to all of us. And please forgive me, Prabhuji, if maybe I've said something wrong. So please no. Everything that you told is absolutely right. It is okay. Thank you so much. Krishna. Thank you. So आप सब के लिए जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारा जो अगला सेशन है वो होगा हमारा नेक्स्ट जो वीकेंड है हमारा 15th, राइट? 15th and 16th. 15th और 16th को हमारा नेक्स्ट सेशन होगा. 15th को मोस्ट प्रोबेबली द सेशन स्पिरिचुअल एम्बेसडर श्रीला प्रभुपाद. ओके, एंड देन 16th को हमारा सेशन होगा, और उसके फिर आगे की जानकारी हम आपको आगे देंगे. तो जिसने भी गूगल फॉर्म नहीं भरा है, आप लोग प्लीज भर दीजिए गूगल फॉर्म. हम अभी 2 मिनट तक हम यहीं पर हैं, आप लोग गूगल फॉर्म भर सकते हैं, और आई होप आप सब हमारे ग्रुप्स में ऐड होंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच. वी विल एंड दिस मीटिंग आफ्टर 2 minutes. प्लीज फिल द फॉर्म सेंट इन द चैट बॉक्स. हरि बोल.